So hey everyone, this is Maruf, and in this video we are going to talk about the journey of Pratiksha Sai Krishna. She is currently doing her MBBS from Aiims Deoghar. In this video we are going to discuss each and every single point, how she cracked Neet and how she achieved her goal. So before going to start, make sure that you watch the video till the end. So hi Pratiksha. Hello everyone, I'm Pratiksha and I'm a first year MBBS student at Aiims Deoghar. I cracked Neet 2022 with a rank of 419. Good. Where are you from, by the way? And your schooling and your grades in the school? Okay, I'm from Cuttack, Odisha, and I completed my class 10th from CBSE board with 96.6%, and my Quite good. 12th also from CBSE board with 97.8%. या गुड गुड मतलब बचपन से बहुत ज़्यादा और मतलब 96% क्वाइट मतलब आई थिंक हम लोगों में से मेरे बैच में सबसे ज़्यादा 96% था. नाउ इफ़ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एम्स जर्नी, सो कहाँ से आपने स्टार्ट किया था, कब आपको पता चला कि मुझे एम्स में ही जाना है या फिर नीट ही क्रैक करना है, एंड हाउ द जर्नी मतलब फ्रॉम द स्क्रैच? Okay, so I formally joined coaching in class 7th और तब कुछ decided नहीं था कि क्या करना है, and that is the first time I came to know about national level exams. First I was introduced to JEE because that coaching was basically for JEE. तो वहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, और मुझे सारे अच्छे लगते थे. मतलब एट द एंड ऑफ 10th व्हेन आई वाज आस्क्ड क्या लेना है, PCM लेना है, PCB लेना है, आई कुडंट डिसाइड. आई टुक बोथ ऑफ दोस. अल्टीमेटली मैंने PCM भी ले लिया. एंड फिर 11th में आफ्टर थिंकिंग अ लॉट आई सेटल्ड कि प्राइमरीली मुझे नीट देना है और प्राइमरीली मेडिसिन पे फोकस करना है. सो आई जॉइंड कोचिंग स्पेसिफिकली फॉर नीट आफ्टर दैट, and then after I cracked the exam and now I'm here. So good, very good. And इससे पता चलता है कि you are not a dropper, right? No, I'm not a dropper. I'm a regular student. So रेगुलर में भी मतलब सीधा एम्स तक पहुंच जाना, इट्स रियली बहुत ही बड़ी बात होती है. सो हम आगे चल कर और भी बात करेंगे कि कैसे क्या रिसोर्सेज फॉलो किया है. सो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना. सो एज यू सेड दैट यू आर ए रेगुलर स्टूडेंट एंड आपने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना नीट क्लियर कर लिया है. सो डू यू थिंक कि ड्रॉप इज वर्थ इट फॉर द एम्स? See, it depends on your current position. If it's your first attempt or your second attempt, then and you're scoring around 600 or 610, 20, then you can consider taking another attempt for a better college. But if it's your third attempt or your fourth attempt, or even if it's your first or second attempt and you think you've given your 100%, you cannot do more than that, then I don't think taking a drop only for Aims is worth it. You can join any college that you're getting because इनमें सबको डिग्री सेम ही मिलता है. इट्स MBBS only, and what matters is कि आप MBBS में कितना सीखते हो, the skills you acquire and the network you build. You have clear on your first attempt. सो डू यू थिंक कि जो बच्चे का एफर्ट नहीं कर सकते हाई इंस्टीट्यूट हाई क्लास, तो उनके लिए कुछ फ्री रिसोर्सेस हैं? अगर है तो क्या है? See, first of all, I'd like to clear the myth that coaching institutes charge a lot of amount. They do, but they also have some scholarship exams which you can attempt and get a good discount. Like, for example, I did not pay a single penny for my coaching in school. I gave a scholarship exam and मेरी rank के हिसाब से उन्होंने मुझे discount दिया था. But I also understand कि मैंने coaching बहुत पहले लिया था, बहुत पहले से start किया था from 7th itself. So I definitely had an edge over other students in the exam, and not everybody has access to such resource.
So you can use free resources on YouTube. Even मैंने भी use किया था to supplement what I was studying. And I used physics वाला का उम्मीद crash course for bio short notes. It was a nice course. Like उतने time में the content coverage was awesome. So you can check that out. फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने पर्सनली नहीं यूज किया था वहाँ से, बट आई हैव माई फ्रेंड्स and according to them it's fairly good, so you can invest your time there. And apart from physics wala, there's a channel called Neet Prep, and you can attempt their Q bank also. You can attempt the Q bank. क्वेश्चंस फ्री में आप अटेम्प्ट कर सकते हो. एक्सप्लेनेशंस आई गेस वो लॉक्ड होता है, फॉर दैट यू नीड टू पे. एंड ऑल्सो उनका यूट्यूब का क्रैश कोर्स इज प्रिटी गुड. एंड वो मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए यूज किया था. And Telegram, of course, is a gold mine. You get all books, test series, and even lectures there. So you can use Telegram. वैसे तो I should not be promoting piracy, but you can check that out also. Yeah. So that's pretty much it. या दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कि यहाँ पे टेलीग्राम को कोई पायरेसी किया नहीं जा रहा है, बट या देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनको ज़रूरी है, मतलब जिनको फ्री रिसोर्सेज की ज़रूरी है, सो डेफिनेटली यू कैन गो एंड चेक आउट. एंड वन मोर थिंग कि आपको जैसे ज़रूरी नहीं कि आपको फला इंस्टीट्यूट में जाके ही आपका नीट क्लियर हो सकता है. काफ़ी सारे ऐसे आप में से या फिर आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग न्यूज में भी सुना होंगे कि बिना कोचिंग के भी यूट्यूब के जो फ्री लेक्चर्स हैं, जैसे कि आप प्रतीक्षा ने बताया कि कुछ जो बताया कि फना इंस्टीट्यूट या फिर फना जो भी यूट्यूब के कोर्सेज हैं उससे जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं. एंड उनमें से भी काफ़ी सारे जो आपको डिवाइडेड करना पड़ेगा कि हमें किस लिए ये चीज़ फॉलो करना है. एंड फॉर दैट मैं और एक चीज़ आपको प्रतीक्षा पूछना चाहूँगा कि यूट्यूब के अलावा जो फ्री रिसोर्सेज के अलावा अगर बुक्स कुछ रिकमेंडेड करना चाहती हूँ तो कौन से रिकमेंडेड जो कि ये बुक डेफिनेटली करना चाहिए, एंड इसके अलावा कुछ सम बुक्स जो ऐड कर सकते हैं. See, when it comes to NEET or even JEE mains, so the holy grail is NCERT. There is no other way about it. You have to read the book to clear the exam. So वो तो डेफिनेटली ही करना है. मतलब एनसीईआरटी का हर टेबल, हर चार्ट, हर फिगर, एवरीथिंग शुड बी ऑन योर टिप्स. लाइक मैंने वो टेबल्स पे जो वैल्यू लिखे होते हैं मैंने उसको क्वालिटेटिव ऑर्डर में कन्वर्ट करके याद किया था. सो यू नीड टू डू दैट एज वेल, बिकॉज क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं. एनसीईआरटी ऐसे सुपरफिशियली देखने में मतलब लगता है कि क्या ही है, बट व्हेन यू स्टार्ट एक्चुअली इन्वेस्टिंग योर ब्रेन इनटू इट, you realize कि it's a marvelous book. I mean, it's one of the most wonderfully written books ever. And apart from that, for bio मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए 2 बुक्स यूज किए थे. एक है डॉक्टर अली एंड देयर इज एमटीजी का एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स. सो डॉक्टर अली 2 वॉल्यूम में आती है एंड इट्स वॉल्यूमलेस. सो इफ यू हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम, आप अभी जो स्टार्ट कर रहे हो 11th में हो या फिर आप 12th में भी हो, सो यू कैन चेक दैट, you can do that. But if you're short on time, then it's better कि आप MTG का fingertips वाला book solve करो. And for physics में you can use DC Pandey, it's good. And it would be better if you can get your hands on some modules or somewhere. Like second hand में भी मिल जाता है I guess, और या फिर टेलीग्राम पे तो मिल ही जाता है. सो बिकॉज मॉड्यूल्स में चीज़ें थोड़े कॉन्साइज तरीके से और थोड़े अरेंज तरीके से होते हैं सिस्टमैटिकली. सो मॉड्यूल सॉल्व करना बेटर है. या एंड हाँ, देयर इज अ बुक कॉल्ड एग्जाम्पलर which is published by NCERT itself. A lot of people don't know about that, but like it's a part of the syllabus, so you should solve the book. या गुड. जैसे आपने बताया कि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ हो ना हो एनसीईआरटी डेफिनेटली ज़रूरी है. एंड फॉर दैट आई वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन कि पीओआईक्यू का कितना मतलब रोल रहता है
क्रैक करने में, किसी भी जेई हो या फिर एनसीईआरटी, जेई हो या फिर नीट एग्ज़ाम हो? या सो PYQs तो आई थिंक मतलब नीट में तो अराउंड 80 to 90% क्वेश्चन PYQs से ही आते हैं, सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस PYQs। एंड इनफैक्ट आप अगर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के PYQs भी करने बैठोगे तो भी इट्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मतलब स्टार्टिंग से 90s से हो रहा है मेडिकल के सारे एग्जाम्स, एंड अभी तक तो यू हैव मोर देन 10K क्वेश्चंस। सो सीखो ही 2-3 बार करो एंड मेक अ मिस्टेक्स नोटबुक आउट ऑफ the PYQs and revise your mistakes. This is a mistake that I did. I didn't make a mistake copy initially, but you should. Yeah, for that I want to ask one more thing question that as you have said that कि आपको एनसीईआरटी एंड पीओआईक्यू डेफिनेटली करना चाहिए। सो यहाँ पे और एक क्वेश्चन जो कि दिमाग में आ जाता है दैट कि जो स्टेट बोर्ड या फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के लिए इज इट रियली इम्पॉसिबल फॉर देम टू क्रैक नीट और जेई who are not from the ICSE or CBSE or something because they don't have NCERT, right? Well, you'd be surprised to know a good proportion of my batch is not from CBSE. So, if they have done it, then you can do it as well. एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि स्टेट बोर्ड्स के बुक्स अलग होते हैं, एनसीईआरटी सीबीएसई अलग होती है, सो इट्स लाइक डबल द अमाउंट ऑफ एफर्ट, यू हैव टू रीड दैट आल्सो, दिस आल्सो, सो आई एग्री विद दैट। एंड सेकंड प्रॉब्लम है लैंग्वेज का, बट देन नीट इज कंडक्टेड in almost like 13 languages or so, so that should not be a problem। and coming to books also, see content दोनों में same ही होता है almost। what differs is the language, the way the book is written। so like what you can do is you can read NCERT throughout and then अब स्टेट बोर्ड के बुक्स तभी पढ़ो जब आपके एग्जाम्स हैं, बिकॉज कंटेंट में फर्क नहीं होगा, बस लिखने के स्टाइल में प्रॉब्लली फर्क होगा। Yeah. So the moral of the story is कि अगर आप if you are not from in CBSE or any English medium student or whatever, but if you are from a state board कहीं से भी हो, आपको एक चीज़ डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। आपको NCERT जुगाड़ कर लो यार, ज़्यादा कीमत का भी नहीं होगा या फिर सेकंड हैंड भी उठा सकते हो। एंड डेफिनेटली वन मोर थिंग कि 10,000 से भी ज़्यादा अभी तक का क्वेश्चन आ चुका है पीओआईक्यू में, उसे अगर एक बार कर लो, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन ऑल्सो कि अगर आप पीओआईक्यू एंड एनसीईआरटी कर लेते हो देन 80 to 90% आपका वहीं पे सॉल्व हो जाता है। सो दैट्स गुड। एंड यहाँ पे और एक चीज़ जो काफ़ी सारा चीज़ दिमाग में आ जाता है, शुड आई कंसिडर एनी वन सब्जेक्ट or I have to focus all the subject equally, because when we talk about the NEET preparation, बायो में ज़्यादा वेटेज रहता है मार्क्स के तुलना में भी या फिर किसी भी। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सवाल बहुत ही ज़रूरी है कि मैं बायो में पूरा स्ट्रांग हो जाऊँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा सा लूज हो जाऊँ तो चलेगा, या फिर तीनों को बराबर मुझे वेटेज देना पड़ेगा। सी बायो में डेफिनेटली ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, बट देन यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि पेपर कैसा आएगा। फॉर एग्जाम्पल 21 में अकॉर्डिंग टू पॉपुलर ओपिनियन फिजिक्स डिफिकल्ट था एंड बायो इजी था, बट 22 में बायो डिफिकल्ट था एंड बायो डिफिकल्ट नहीं था, बायो थॉट प्रोवोकिंग था एंड उसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा था एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो यू कैन नॉट एक्चुअली प्रेडिक्ट कि कौन सा सब्जेक्ट इजी आएगा, कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट आएगा पेपर में। सो माय पर्सनल एडवाइस कि आप सब पे इक्वली फोकस करो। इफ यू आर स्टार्टिंग आउट लाइक यू आर इन 11th और यू आर इन 12th, बट इफ यू आर शॉर्ट ऑन टाइम लाइक एग्जाम्स का भी 3 months और समथिंग ऐसा है, then definitely you should pay more attention। वो उसका वेटेज भी ज़्यादा है, 50% of the paper, and so obviously that's more high yield, but still I would advise कि बाकी दोनों को भी ऐसे neglect मत कर दो पूरा। You have to focus on all the 3 subjects। ओके गुड। ऑब्वियसली आपको एक चीज़ डेफिनेटली ये करना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि बायो में ज़्यादा वेटेज है इसका मतलब हम बायो ही सिर्फ पढ़ के जाएं, बाकी दोनों को मतलब बस
पास मार्क्स ऐसा कुछ, अगर थोड़ा सा मार्क्स लेके हम क्रैक कर सकते हैं, देन यू आर इन ए रॉन्ग पोजीशन। आपको तीनों में बराबर वेटेज देना पड़ेगा। एंड यहाँ और एक सवाल जाग जाता है कि अगर तीनों में बराबर वेटेज दें तो कि मुझे एक सब्जेक्ट में हर एक का जो भी चैप्टर होता है, हर एक चैप्टर में मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बराबर फोकस करना चाहिए, या फिर किसी भी चैप्टर में मैं मास्टर्स कर लिया मैंने, तो उसको ज़्यादा मैं प्रेफर कर सकता हूँ, और जो सब्जेक्ट या जो चैप्टर मेरे से नहीं हो रहा है तो मैं उसे इग्नोर कर सकती हूँ। Okay, so see, NEET के एग्जाम में they don't ask you very deeply like JEE Advanced or KVPY वगैरह में. So NEET में even if you have superficial knowledge of the formulas and all, then also it works. You should know कि हर chapter का content क्या है. मतलब भले ही you don't have a mastery over the chapter, but you should turn the pages of every chapter. That is important. Uh, like this is a common problem among many NEET aspirants कि they lack in physics and physical chemistry, as I've observed. So what you can do is instead of going through all the theories and all, is you read all the important formulas. भले आपको derivation ना आता हो, you should know what the formula is because most of the questions are formula apply करो, answer निकालो, and you are done. So, if you are interested, you can go for mastery on subject. Like मैंने भी काफी सारी किताबें पढ़ी थी, and I also gave Olympiads. But if you are not able to do that, you should at least know every chapter superficially also. या आई थिंक जो प्रतीक्षा बताई है मैं भी उससे एग्री करता हूँ कि अगर आपको जो भी मतलब चैप्टर वाइज आपको डेफिनेटली वो करना है। एंड यहाँ पे और एक चीज़ जो ऐड करना चाहूँगा कि अगर एंड पोजीशन में जैसे कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तब बिल्कुल अगर आपको किसी भी चैप्टर में वीकनेस है तो डेफिनेटली उसे खोल के ना देखा जाए, ऐसा मेरा मानना है। और जो और एक बात बताई कि आपको मतलब आपको डिसाइड कर लेना है कि ना कुछ आपको समझ में आ जाएगा जब आप तैयारी करेंगे, या फिर आपको टीचर भी बता देंगे कुछ कुछ चैप्टर हैं जिनको आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, अच्छे से जो एमसीक्यू आ सकता है अच्छे से, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आ सकता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आपने ऑलरेडी बताया कि आपने केवीपीआई ओलंपियाड जैसे एग्ज़ाम दिया था। डू यू थिंक कि ये सब एग्ज़ाम आपके तैयारी में काफ़ी ज़्यादा मदद किया है? I gave the exams out of sheer interest, to be honest. मुझे सारे एग्जाम्स को एक बार एक्सपीरियंस करना था एंड आई पर्सनली एंजॉयड द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड क्योंकि उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है एंड यू डोंट गेट अ स्ट्रेट आंसर, यू हैव टू पुट योर ग्रे सेल्स टू वर्क. सो दैट्स व्हाई मैंने वो एग्जाम दिया था एंड इट्स नॉट अ कंपल्शन कि आपका केवीपीवाई नहीं निकला तो आपका नीट नहीं होगा, और इवन कि आपका केवीपीवाई नहीं निकला तो आपका जेई नहीं होगा, ऐसा नहीं है. देयर आर मेनी एग्जांपल्स, देयर आर मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स who are at great places and they did not clear one or two of those exams. It's completely fine. But what the advantage of giving these exams is, पहला तो ये है कि कोर्स जल्दी क्लियर हो जाता है. सी अगर जब तक कोई सब्सटेंशियल डेडलाइन नहीं होता ना तब तक वो दिमाग में बात जाता नहीं कि पढ़ना है पढ़ना है. सो वो लूजनेस आ जाती है प्रिपरेशन में. आई गेव द एग्जाम्स एज अ चेक मार्क कि इतने टाइम तक तो मुझे ये सब कवर कर लेना चाहिए. सो दैट हेल्प. एंड सेकेंडली मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वो एग्जाम्स देके. So these are the two advantages, and yes, they give you admission to many other institutes like ISERS, NISER, and all. So by chance, if your JEE or NEET does not go as planned, you always have an option. या सो यहाँ पे आपने ऑलरेडी बता दिया काफ़ी सारा, मतलब आपका जरूरी नहीं कि ये आपको हेल्प करेगा या फिर इस क्लियर नहीं हुआ तो आपका जेई क्लियर नहीं होगा या फिर नीट क्लियर नहीं होगा, लेकिन हाँ ये ऐसे लेवल के एग्जाम होते हैं जो आपको अगर ये क्लियर हो जाता है तो देयर आर मोर चांसेस कि आपका जेई एंड नीट भी क्लियर हो जाए. सो अगर आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट. एंड इससे सिर्फ आपका जैसे कि लास्ट पॉइंट प्रतीक्षा ने बताया कि आपको सिर्फ इससे अगर आपका इसमें क्वालिफाई हो जाता है, ताकि इवन इफ यू आर ए जेई स्टूडेंट
तो आपको काफ़ी सारे जैसे ट्रिपल आई हैदराबाद वगैरह जैसा हो गया, उसमें आपको डायरेक्ट एंट्री मिलते हैं, डायरेक्ट एडमिशन मिलता है अगर जेई के रैंक उतना अच्छा नहीं है तो। सो हाँ, अगर आप चाहते हो, अगर आपका इंटरेस्ट है, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। एंड यहाँ पे जो मैं बताना चाहूँगा कि कुछ मिस्टेक्स जो कि ऑब्वियसली हम लोगों में अवॉइड करना चाहिए एट द टाइम ऑफ एग्जाम, या फिर एग्जाम से 8 दिन पहले या फिर 1 वीक पहले। वन ऑफ द मेजर मिस्टेक्स पीपल डू, लाइक वो 3 महीने पहले करते हैं कि हम रिवाइज करते हैं पर हम शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते। एग्जाम से 8 दिन पहले यू कैन नॉट रिवाइज ऑल योर नोट्स, ऑल द बुक्स, ऑल द क्वेश्चंस। There has to be some concise resource which you can do in the last 8 days. एंड ये तो गलती बिल्कुल ही मत करना कि एग्जाम से 2 दिन पहले हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, वो नहीं करना है। एंड इट इज गुड अगर आप अपने मॉक्स का फ्रीक्वेंसी भी कम कर दो इन द लास्ट वीक एंड यू फोकस मोर ऑन द मिस्टेक्स दैट यू डिड लाइक टिल डेट। ये मेरी भी गलती थी that I gave a lot of exams in the last week instead of actually revising जो short notes, and short notes भी मैंने काफी जल्दी में बनाए, like in the last month short notes should be ready by 2 months before the exam and you should keep revising those short notes only, and attempt tests, that's it. So yeah, 8 days before the exam, you should be revising your short notes and you should not be reading anything new at all. आपका 2 टॉपिक छूटा है, 5 टॉपिक छूटा है, एक सब्जेक्ट छूटा है, does not matter. You are not going to touch anything new in the last 8 days, and you are going to consolidate whatever you've learned throughout the course of your preparation. एंड या एक और चीज होता है कि मेरा फॉर एग्जांपल लास्ट वीक का मॉक्स अच्छा नहीं गया था, सो आई गॉट प्रिटी डिसहार्टेंड कि एग्जाम भी खराब हो जाएगा एंड ऑल, उस चक्कर में मैंने टाइम वेस्ट भी कर लिया, सो डोंट डू दैट। सो हाँ, अगर आपने सही बताया कि ये तो डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वॉटेवर अगर आपका जस्ट लाइक कि प्री टेस्ट के अलावा जो फाइनल एग्जाम के जैसे बोर्ड में भी होता है, बोर्ड के पहले अगर आपका 100 में से 90 आ गया, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि आपको बोर्ड में भी आपका 90 आएगा। आपका प्रिपरेशन सही है, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रहना जरूरी है एंड उसके बेसिक पे आपको चलना है, उतना उदास भी नहीं होना है, उसके चक्कर में जो पढ़ा था वो भी हो सकता है दिमाग से निकल जाए, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। सो यहाँ पे चलो यार, आपने सब कुछ करके एम्स पहुँच ही गई फाइनली। सो यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है कि अगर एम्स में सोसाइटी एंड क्लब्स आपके करियर में या फिर आपके पर्सनल ब्रांडिंग में आपको या फिर अपने पर्सनल जो पर्सनालिटी में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है? सिंस दिस एम्स देवघर इज 2019 एम्स, अभी जो सारे क्लब्स है वो मतलब टोटल स्टूडेंट कंट्रोल में नहीं है एंड वी हैव फैकल्टीज हु प्राइमरीली रेगुलेटेड, बट हमारे इधर सारे ऐसे फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट होते हैं एंड इवन आई एम द कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माय बैच एंड even though there are no functional formal clubs, but हम लोग ऐसे सीनियर्स से बात करके we do jam sessions and all, like अभी I think poetry and all is pretty much in the air here, and also अभी जैसे ICMR STS का हम लोग रिसर्च पेपर प्रपोजल सबमिट कर रहे थे, सो वी ऑल सैट टू डिस्कस विद आवर सीनियर्स कि कैसे करना है एंड ऑल। सो और ऐसे बीच बीच में हमारे मूवी स्क्रीनिंग्स भी होती हैं, मूवी वो जो फिल्म क्लब है एंड फोटोग्राफी वगैरह भी होता है इधर। So these clubs, they help you de-stress because trust me, तुमने नीट में जितना पढ़ा है ना पूरे 2 साल, you'd be covering more than that in the first month of college itself. Yeah. So it gets pretty overwhelming. So it's good कि you participate in some other activities and break out of your comfort zone a little bit. For example, I was not much into cultural activities earlier, but now I am. So it helps me discover new sides of myself, and yeah, it's fun. एंड बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत ही अच्छे Most तरीके importantly, you get to meet new people. Like
Like the amount of insights I got from people here, people from all parts of the country, people with varied interests and varied opinions, it's very enriching. या वन मोर थिंग कि आपको नए नेटवर्किंग का मौका मिलता है आप एंड देयर वाज अ लाइन कि आप द नेटवर्किंग इज योर रियल वेल्थ राइट सो आप Yes. जितना ज़्यादा नेटवर्क करोगे आपको करियर में बहुत ज़्यादा डेफिनेटली आपको ग्रो करने का मौका मिलेगा एंड यहाँ पे मैं और एक ओपिनियन जानना चाहूँगा कि बीइंग ए नर्ड और बुक्स में बहुत ज़्यादा घुसे रहना एंड नेटवर्क बनाना सोसाइटी में पार्टिसिपेट करना क्या दोनों बराबर ज़रूरी है या फिर अगर करियर अच्छा पाना है तो मतलब बहुत ज़्यादा बुक में घुसे रहना ज़रूरी है? See, it is important to maintain a balance, and as easily as I say it, it is pretty difficult. At least that's what I've realized. कि दोनों के बीच में achieving the right study party balance is pretty difficult, but it is necessary to do that. There is a saying na कि all work and no play makes Jack a dull boy. So you should study definitely. Studying is very important, but at the same time, going out, meeting new people, exploring is also important. Because, for example, I did not know I knew so many things before coming to college. इधर आके लोगों के साथ बैठ के I started singing, I started dancing. I'm doing things I never imagined myself to do before. And as I said earlier, networking is very important. Right now, I know so many people from different colleges from all over India, and we discuss things at times. We discuss papers, research papers, and we also discuss like जैसे कहीं पे हम बाहर गए तो उनको वो जगह का experience बताया and all. So that adds value to your life and that adds value to your career also. आप जैसे किसी भी कॉलेज में कोई फेस्ट होता है देन यू शुड गो एंड ट्राई टू अटेंड दोज फेस्ट ताकि सी द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू बी लाइक become visible to other people, become known to other people. It should not happen कि at the end of the college आपको कोई पहचानता नहीं है. Yeah. So it is important to get known because opportunities वैसे ही आती हैं. जैसे मतलब लोगों it से might मिल so के happen if you don't network you get lost in a corner और आपको कोई कोई इवेंट हो रहा हो आपको पता ही ना चले ऐसा ना हो. या आपने सही बताया कि आपको मतलब एट द एंड आपको सिर्फ आप डॉक्टर बन चुके हैं लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कुछ डीप डाइव में चले जाएं कि अगर आपको डॉक्टर बन भी चुके हैं देन आपको जरूरी है वो नेटवर्किंग राइट इफ यू डू समथिंग बिग वॉट एवर इन योर करियर वॉट एवर इट्स डॉक्टर वॉट एवर इट्स इंजीनियरिंग कुछ भी अगर आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा करना है नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों से मिलना जरूरी है लोगों को हो सकता है आप जो चीज़ जो प्रॉब्लम होता है ना आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो वो लोगों से मिलके ऐसे कई सारे लोग हैं वो चुटकी में ऐसे सॉल्व कर रहे हैं सो हाँ आपको डेफिनेटली इन सब में पार्टिसिपेट करना चाहिए ऑब्वियसली पढ़ाई अपनी जगह है एंड पढ़ाई में आपको फोकस करना जरूरी है एंड यहाँ पे और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हाउ डू वी मतलब हाउ हाउ टू डू स्मार्ट वर्क मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं कि क्या जरूरी है कि हम लोग लगातार मेहनत करते जाएं या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि लगातार मेहनत करने के बावजूद उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है सक्सेस इन द सेंस कि उनका नीट क्रैक नहीं हो रहा है तो आपको क्या लगता है कि कुछ देयर आर इज देयर सम स्मार्ट वर्क? Okay, so there's a difference between hard work and there's something called smart work. Now, I won't say hard work is not important at all. It is important because maybe जो चीज़ आप maybe manage नहीं कर पा रहे हो, but you if you keep doing it over a long period of time, you'll eventually achieve it. You'll be able to do it. But वही है कि it will take a long amount of time. You have to optimize that time in order to convert it to smart work. Uh,
See, when it comes to smart work, it's not about कि आप 4 घंटे बैठ रहे हो, 8 घंटे बैठ रहे हो. The thing is आपका output कितने घंटे का आ रहा है. If you're sitting for 8 hours in a day, but if your output is of only 1 hour, then बाकी के 7 घंटे are waste. Yeah. So you just pretending that you're doing stuff, but you're not actually doing stuff. बट इधर एक और चीज भी आता है कि कोई टॉपर बोले कि मैंने बस 4 घंटे ही पढ़ाई किया था, एंड वो सुन के आप भी 4 घंटे ही पढ़ाई करो. सो बट उसका कैपेसिटी ज्यादा है, उसका एफिशिएंसी ज्यादा है, उसने कर लिया बट आपने नहीं कर पाया. तो वो तो हो गया ना डबल एज स्वॉर्ड. सो अगर आपको किसी टॉपिक किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए से 6 घंटे लग रहे हैं, टॉपर को 4 घंटे लग रहे हैं, तो आपको वो 6 घंटे देने हैं. ऐसा नहीं कि टॉपर ने बोला 4 घंटे तो हम 4 घंटे ही पढ़ने बैठे बस. And for people who are not able to crack it, first of all, sit down and analyze. What I've observed from my personal experience is कि हम गलतियां रिपीट करते हैं, बहुत बार रिपीट करते हैं. इसे मार्क आउट नहीं कर Like, सकते. हाँ मतलब जैसे मैंने जब फर्स्ट टाइम फर्स्ट सिलेबस कवर किया था, मैंने जो मिस्टेक्स करी थी, एक और बार रिवीजन के बाद भी आई रियलाइज कि आई एम डूइंग द सेम मिस्टेक्स. जो चीजें क्लियर हो जाती है ना वो पहली बार में हो जाती हैं, और शायद 10 से 20% एक रिवीजन के बाद क्लियर होती है, बट जो गलतियां होती हैं वो कैरी फॉरवर्ड करती हैं. So if you're not able to achieve as much as effort you're putting, then there is probably some lacking in some definitive parts of your learning. पूरा चैप्टर आपका प्रॉब्लम नहीं है, आपका एक टॉपिक प्रॉब्लम है. हार्ड वर्क इज डूइंग द एंटायर चैप्टर अगेन, स्मार्ट वर्क इज डूइंग द स्मॉल टॉपिक अगेन. या जो आपका प्रॉब्लम हो रहा है वही सिर्फ आप रिपीट करो. एंड सो यहाँ पे और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो लोग जैसे आपने बताया कि आपको ऐसा करना चाहिए, एंड यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन आता है. अगर मैं फिर से सवाल करूँ कि लॉन्ग स्टडी के बीच अगर बहुत लोग परेशान हो जाता है ना कि इतना ज़्यादा लॉन्ग स्टडी नहीं हो रहा है, सो वहाँ पे कैसे मतलब मैनेज कैसे करें, बीच बीच में ब्रेक लें, अगर ब्रेक लें तो कितने टाइम के लिए लेना चाहिए मैक्स टू मैक्स? There is a method called Pomodoro method. It says कि आप एक definitive time के लिए से 1 hour के लिए पढ़ रहे हो और 5 मिनट ब्रेक ले रहे हो. But that method personally doesn't work for me. I would rather follow a flow study method. किसी टाइम मेरा concentration आधे घंटे का है तो आधे घंटे के बाद I'll take a 5 minute break. Sometimes मेरा concentration 2 घंटे का है, so why should I break the flow in between? I should continue studying for 2 hours and then take a break when I'm actually exhausted. और breaks में ना try to give yourself some actual rest. Like breaks में don't go through any intense videos or something. You can watch something light-hearted. Like I used to watch a stand-up comedy clip in between. दैट्स अ गुड ऑप्शन. ऑब्वियसली आपको मतलब ब्रेक में सबसे ज़्यादा जो लोग गलती करते हैं, ब्रेक लेना है आपको खुद को रेस्ट देने के लिए. ऐसा नहीं कि आपको ब्रेक में लेके अगेन आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो. सो वहाँ पे आपको रोक लगाना चाहिए. इवन अभी ऐसा हो रहा है जो सोशल मीडिया स्पेशली द रील्स वगैरह, ये लोग ऐसा हो रहा है एक बार ओपन होने के बाद ख़त्म ही नहीं हो रहा है. उन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा आपको रेस्ट्रिक्शन रहना ज़रूरी है. And for that, I want to ask you the last but the not least question, and best advice to crack Aims in 2023. Okay, before this, I would like to tell you something about the social media thing. I was not on Instagram or Snapchat or anything. I only had WhatsApp at the time of my preparation, and I feel वो काफी सही चीज था. Now that I am on social media, I realize कि कितना time जा रहा है इसमें actually. So maybe if you can try to restrict your social media usage, because उसके बाद तो you have your entire life for this. अभी 2 साल पढ़ लो, so that works better. So yeah, and about best advice. So see, there is no single best advice. Everybody's approach is different. Everybody's problems the way they show up is different. But there are definitely some common patterns in the problems that we face. And उसको solve करने के लिए you should
go to some experienced person. You should seek some experienced advice. They may be your teachers, your parents, your seniors, anybody who is a mentor. And I feel that is the single most important thing. और हाँ, second चीज, we run after motivation. सी हम सीख करते हैं कि पहले हमें मोटिवेशन मिले, उसके बाद हम एक्शन करेंगे. बट ट्रस्ट मी, इफ यू सिट टू स्टडी फॉर हाफ एन आवर, देन यू विल फील लाइक स्टडिंग. ऐसा नहीं कि आपको पहले 1 घंटे का मोटिवेशनल वीडियो देखना है और फिर पढ़ाई करना है. वो जो साइकिल है, इट शुड नॉट बी मोटिवेशन एंड देन एक्शन, इट शुड बी एक्शन एंड देन मोटिवेशन. इट इज इम्पोर्टेंट. और बेस्ट एडवाइस तो यही है कि पढ़ाई करो, एनसीईआरटी पढ़ो, पीवाईक्यूज करो. उससे बेटर एडवाइस तो और कुछ नहीं हो सकता. वही यार, आपको कोई भी बेस्ट एडवाइस के, हर बेस्ट एडवाइस के ऊपर एक ही चीज़ है, पढ़ाई करना है. पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है. एंड स्पेशली उन लोगों से दूर रहें. उन लोगों से मैं तो ये भी बताऊंगा कि इफ़ यू आर समवन सेइंग कि आपको ये चीज़ 2 घंटे या फिर 4 घंटे देने से ही हो जाएगा, फर्स्ट यू हैव टू नो दैट इट्स नॉट लाइक कि आपको समथिंग, इट्स नॉट ए ईजी टास्क. आपको ये मानना पड़ेगा, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं कि हो नहीं पाएगा, ठीक है. आपको टाइम देना है, इतना भी नहीं कि आपको मतलब पूरे दिन घुसे रहना है, फिर इतना भी नहीं कि बस देते ही उन्हें उसका 2 घंटे में हो गया तो मेरा भी 2 घंटे में हो जाएगा. आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा कि आपको कितना टाइम देने से हो रहा है, एंड डिस्ट्रैक्शन से काफ़ी ज़्यादा दूर रहो. सो दैट्स ऑल अबाउट. एंड वन मोर थिंग, कि हम काफी सारे टॉपर्स वीडियोस देखते हैं एंड वी गेट लॉस्ट इन द फैंटेसी. जो भी बोलते हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं. सी, माय एक्सपीरियंस इज कन्फाइंड टू मी only, and probably some people who have been around me, some 4 to 5 people who prepared alongside me. I cannot possibly cover every possibility. ऐसा हो सकता है कि मतलब हम लोग का प्रिपरेशन में जो प्रॉब्लम था, that is different from what your problems are. So you should introspect and act according to your situation. Advice सुनो, but उसको blindly follow मत करो. सो यहीं पे एक हिंदी में कहा जाता है कि आप सुनो सबकी एंड करो अपनी. क्योंकि डेफिनेटली कोई किसी भी आपको टॉपर का इंटरव्यू देख लिया या फिर टॉपर का मोटिवेशन देख लिया, आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, उससे रिलेट कर सकते हो कि मेरा जो प्रॉब्लम हो रहा है, अगर सेम प्रॉब्लम हो रहा है, सो मैं इसे अचीव कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ. सो वो फॉलो कर सकते हो. एंड वन मोर थिंग कि आप ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को, व्हाट एवर इट्स मी, व्हाट एवर इट्स प्रतीक्षा, किसी भी चीज़ को आप ब्लाइंडली फॉलो मत करो. आप हर किसी का पेपर, द एग्ज़ाम, आपको जो आपका एग्जाम, लाइफ का एग्ज़ाम हो या फिर आपका नीट का एग्ज़ाम, हर किसी का आपको खुद को देना पड़ेगा. उसके हिसाब से तैयारी करो. ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आपको जहाँ जहाँ जो सवाल आता है, जो जो प्रॉब्लम होता है, जो आपके दिमाग में हमेशा वो आंसर नहीं मिलता था, उसका आई थिंक कुछ आंसर इसमें शायद आपको मिल जाए. So thank you so much, Pratiksha, and thank you for the attending this class or whatever is your advice. Thank you.